ओके जी, लास्ट टाइम हमने जो फ्रंट एंड यूआई डिज़ाइन कर रहे थे उसमें हमने कार्ड डिज़ाइन कर लिए थे, कार्ड का इमेज रह गया था. So just we have to go and grab the image from here for now. इसको हम save as an image कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं. यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कोई भी प्रोडक्ट वन नाम दे के इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे एंड मेक श्योर ये सेव हो गया. इसको यहाँ से आप दो तीन प्रोडक्ट्स की इकट्ठी पिक्चर्स डाउनलोड कर लें सो दैट वी कैन प्लेस एंड वी कैन make our on project exactly look like that. So save image and go to the desktop again, and for now this is going to be the product 2, and same is with the case of this product 3. So make it like product 3 and hit OK. इन तीनों प्रोडक्ट्स को यहाँ से कट कर लें. अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर एसेट्स, इमेजेस और यहाँ पे प्रोडक्ट 1 2 3 ये तीन इमेजेस आ गए हमारे. और इसको हम यहाँ जाएंगे, सोर्स में जाके, कंपोनेंट्स में जाके, कार्ड में जाके एंड देन कार्ड डॉट CSS. अब द प्रॉब्लम इज कि हम एक ही कार्ड को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो जब हम डायनामिकली इसको रेप्लिकेट करेंगे तो हम इमेज भी बैकएंड से लाएंगे. तो फिलहाल मैं बजाय तीन इमेजेस के एक ही इमेज लगा देता हूँ. तो ऑब्वियसली चूंकि एक ही कंपोनेंट ये कार्ड का कंपोनेंट ही हमारा होम के पेज पे आई थिंक रेप्लिकेट हो रहा है 3 टाइम्स, कार्ड कार्ड और कार्ड. तो हम एक इमेज लगाएंगे तो तीनों कार्डों पे, ये जो फ्रंट एंड पे लगा हुए फ्रंट एंड में नजर आ रहे हैं, इन तीनों कार्ड्स पे हमारा सेम इमेज जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा. फॉर नाउ इट वुड बी ओके बिकॉज वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग द डिजाइन पार्ट. लेटर ऑन जब हम इसे डायनामिकली लाएंगे डाटा बैकएंड से तो हम ये इमेजेस जो है वो एज इट इज वहां पे ले आएंगे. सो जस्ट गो टू द कार्ड एंड इनसाइड दिस कार्ड, in fact in JSX, let me import the product 1 from two level back and then assets, and inside assets I have image, and inside this I have product 1, and let me check it if it is JPG or PNG. So hover over it, it's a PNG image, so that's why like you have to write like PNG. और अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, इस सोर्स में जाऊँ और इसमें मैं ये वेरिएबल दे दूँ which is pointing to the actual image. So let me refresh this page to see the changes or to reflect the changes. So let's see, and here is it goes. हमारे पास जो है वो तीनों का जो हमारा कार्ड इमेज है that looks the same. And now what we gonna do is कि अब हम ये थोड़ा सा यहाँ इसको बॉर्डर शॉर्डर एडजस्ट करेंगे. और उस बॉर्डर में हमारे पास जो KFC में है उसका ये बॉर्डर नहीं है, हॉवर पे बॉर्डर आता है. ठीक है, नॉर्मली ये जो बॉर्डर है वो नहीं है. विल डू दैट अगेन. और इस पे बटन्स भी दो हैं, आई मीन these are the two different buttons. So let's begin making that. तो पहले तो आप इसको कहें जी कि ये जो नॉर्मली फ्रंट एंड पे आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हाउ वी कैन ओवरराइड दिस बॉर्डर स्टाइलिंग. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कार्ड में तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस वन. अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बॉर्डर जो है वो हमारा भी हट जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि व्हाट वी हैव टू डू, अच्छा एक बॉर्डर हम लगाना है और दूसरा ये पैडिंग, ये ग्रीन कलर की पैडिंग नजर आ रही है ऑल अराउंड दिस कंटेंट. तो ये मोस्ट प्रोबेबली होगी कार्ड की बॉडी पे. इफ आई गो टू द कार्ड बॉडी दैट्स टेकिंग अप द पैडिंग. ठीक, तो हम कार्ड की बॉडी की क्लास को टारगेट करेंगे, इसकी पैडिंग खत्म करेंगे और कार्ड इटसेल्फ कार्ड की क्लास को टारगेट करके यहाँ से हम बॉर्डर खत्म करेंगे. सो वी हैव टू टारगेट टू थिंग्स फ्रॉम द कार्ड. वन इज नंबर आई मीन कार्ड, और दूसरा हम क्या कहेंगे जी इसकी कार्ड बॉडी. और मेक श्योर के ताकि हमारी, चूंकि इस पूरे पेज पे कार्ड कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है, तो मे बी हम कोशिश ये करते हैं कि हम क्लास को उसके पेरेंट से टारगेट करते हैं. हम ये कार्ड रैपर यूज करेंगे एज अ पेरेंट क्लास. सो ये जस्ट एक एहतियात है. और इसको भी मैं ये करूँगा और मैं कार्ड से जाके क्या करूँगा, बॉर्डर
कि एग्जिस्टिंग बूटस्ट्रैप के जो स्टाइल्स हैं उनको मैं बॉर्डर को नन कर दूंगा। लेट मी डू दैट दिस वन। और यहाँ आके मैं क्या करूँगा, पैडिंग इज गोइंग टू बी लाइक 0। इफ आई नाउ रिफ्रेश द पेज आई विल बी हैविंग पैडिंग, आई मीन नो स्टाइल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। उसकी वजह ये है कि हमने ये card.css को इधर इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। सो मेक श्योर टू इंपोर्ट these styles as well. So import what is the name of the css file, and that is in the current folder and with the name card.css. With that thing done, what we can do is now we can refresh it to see the changes in the styles. So these styles should be reflected. हमारी पैडिंग भी खत्म हो गई, हमारा बॉर्डर भी खत्म हो गया। नाउ हमें ऊपर से ये बिल्कुल टॉप पे कार्ड के साथ जुड़ गया, हमें यहाँ टॉप से थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। सो हम यहाँ पे जाके इसको टारगेट करके पैडिंग 0 की है और फिर पैडिंग टॉप इसको सिर्फ दे देंगे like that's gonna be might be 12 pixels or something. That's a pure guess. So that's pretty much looking uh, better to some extent. अब यहाँ नीचे लिखा हुआ go somewhere and we need 2 buttons instead of 1. So what we can do is we can in fact go to this and right over here. So go somewhere के बजाय हम यहाँ पे price लिख लेते हैं. For example, it is going to be like PKR 295 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी add to bucket, add, I mean like this, add to bucket. So let me have somebody in as well. So like if I go and hit, this is exactly like the same. और हम इनको अब फुल विड्थ कर लेंगे, फुल विड्थ इनको कर लेंगे। मेक श्योर के आप इनको बेहतर है कि बटन्स बना लें, क्या हम बाद में देखेंगे इनको बटन्स बनाना या नहीं बनाना, लेकिन हम इनको BTN रैपर कह लेते हैं, यानी इन दोनों को एक डिव में शिफ्ट कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, और इस BTN रैपर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। डी फ्लेक्स बूटस्ट्रैप 5 में ये डी फ्लेक्स की क्लास जो है वो बिल्ट इन है, ठीक है। सो डी फ्लेक्स के बाद हम इनको कर लेते हैं जी विड्थ दोनों की, यानी BTN रादर दिस, इस BTN को मैं यहाँ जाके लाइक दिस और दिस, इनकी जो विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी 50%, नॉट BTN रैप बल्कि BTN रैपर के अंदर जो एंकर टैग है दैट इज गोइंग टू बी द सेम लाइक दिस। और इसके बाद इनका जो बॉर्डर रेडियस है, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो स्लाइड से थोड़े से एजेस राउंडेड है, आई हैव टू एक्चुअली गेट रेड ऑफ दैट। सो बॉर्डर radius that is going to be none, just to see if it works. No it didn't, border radius हमारा none नहीं हुआ। So let's see कि why it is not taking up that border radius none. So this is what, and ये property हमारी नहीं pick कर रहा because might be ये none इसकी वैल्यू वैलिड नहीं है। बॉर्डर रेडियस 0 कर देते हैं, दैट माइट बी, जब ये यहाँ पे इंस्पेक्ट में किसी भी प्रॉपर्टी पे वो लाइन आए स्ट्राइक थ्रू वाली, तो उसका मतलब वो प्रॉपर्टी हमारी वैलिड नहीं है। सो अब हमने बॉर्डर रेडियस खत्म कर दिया है। अब इन दोनों बटन्स में से एक बटन को हम उसका जो कलर फिल है वो नहीं देंगे, बॉर्डर देंगे, और दूसरे को एज इट इज वो कलर अपनी थीम के मुताबिक चेंज कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। लेट्स गो टू द बूटस्ट्रैप क्विकली, और बूटस्ट्रैप boot where is the bootstrap, and let's get bootstrap, और इस get bootstrap में जाके हम इसकी 5.0.2 वर्जन कल हमने सेलेक्ट किया था, और इसमें कंपोनेंट्स में जाएं, और यहाँ जब आप बटन्स में जाएंगे तो ये बटन्स आपको सारे के सारे फील्ड वाले नजर आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये सारे के सारे बटन आपको आउटलाइन वाले नजर आ रहे हैं। सो आई हैव टू पिक दिस काइंड ऑफ बटन अप। जो फर्स्ट बटन है वो मेरा इस तरह का होना चाहिए, एंड दैट इज काइंड ऑफ लाइक दिस। So instead of anchor tag, let this be a button, this one, और इस बटन को मैंने यहाँ जाके BTN रैपर की
जो क्लास दी है, ये क्लास क्या करेगी, उसकी विड्थ और उसका रेडियस एडजस्ट करेगी, और बाकी जो क्लासेस बिल्ट इन है, बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन, डेंजर, ये एज इट इज रहेगी इसके साथ. सो विद दैट let us go back and see. Yes, it looks like that. मैं width adjust कर लेता हूँ, but the second thing is, दूसरा बटन हमें क्या करना है, दूसरे बटन को हमने बटन दिस, और इसको भी यही वाली क्लास दे देनी है दिस, और इसका क्लोजिंग टैग जो है that needs to be button2. Right, so everything seems good. Now if I go back and if I see this, और बाकी चीज तो ठीक हो गई, बट आई मीन इसने चेंजेस को रिवर्ट कर लिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बीटीएन रैपर में डी फ्लेक्स भी है, ठीक है, दैट्स इट. इसकी जो टाइप है दैट नीड्स टू बी button2, बट दिस इज लाइक दैट. इसको भी बीटीएन रैपर मिला, इसको भी बीटीएन रैपर मिला, और ये हमने कहा जी बीटीएन रैपर, और यहाँ पे क्योंकि हमने वहां पे एंकर टैग को रिप्लेस कर दिया बटन, so we need to do the same change right here as well. So that's pretty much looking like similar, except the color which is this one. Like अगर हम यहाँ देखें तो ये कलर इस तरह का है, हम इस कलर को यहाँ से चूज कर लेते हैं, या फिलहाल हम डेंजर वाला डिफॉल्ट रख लेते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इन टू मच निटी गिटी डिटेल, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ जाएगा. सो हम यहाँ पे इसको भी क्लास दे देते हैं btn danger, and ये instead of btn primary that is going to be btn danger. So now our card should be finally ready and should look like the same as that in case of, और इस danger की जगह what we have to do is we have to write like price, और वो किस फॉर्मेट में होनी है, pkr 520. So let's go and move it to pkr, that is going to be 520, and that's something like that. सो हमारा कार्ड भी डिजाइन हो गया. उस कार्ड के बाद हमें कहाँ जाना है, यहाँ इस लोगो पे जाना है, और एक यहाँ पे हमने करना है जी बैक टू टॉप बटन. सो लेट्स inspect this, I mean not inspect this, rather let's just save this image, because we are going to need that, and save this image inside the E directory, inside the KFC, and then front end, and then source, and then assets, images, or footer logo, and that's with the same name. सो कम बैक टू दिस. यहाँ पे आपको छोटी सी लाइन भी नजर आ रही है, उस लाइन से नीचे है ये लोगो. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम कार्ड का काम हमारा फिनिश हो चुका है, वापस हम यहाँ जाएंगे, और हम यहाँ पे जाएंगे फुटर में, एंड वेयर इज द फुटर, ये फुटर, इस फुटर के अंदर आएंगे, RAFCE करेंगे, और देन इसको हम कहेंगे जी दैट इज गोइंग टू बी द फुटर. इसको हम कहेंगे क्लास नेम, दैट इज गोइंग टू बी फुटर wrapper, and with that what we're going to do is we have to write insert an image here, or inside the image what we're going to do is import footer logo, and that is going to come from the assets, and inside the assets we have image, and inside the image we are having footer logo dot png. Make sure everything is correct, and then this. So let's have a look at that. We didn't do anything. I mean हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा. उसकी वजह ये है कि हमने ये फुटर का कंपोनेंट एक्सपोर्ट तो किया, कहीं यूज नहीं किया, रेंडर नहीं किया, ठीक है. सो वेयर वी आर गोइंग टू डू इज, हमारा बाकी सारा काम किधर हो रहा है, होम पेज के ऊपर. So come over here in the home page, right after the last card. Make sure कि ये उसकी रो एंड हो रही है. So ये पूरी रो है, इसके अंदर 1 2 3 कार्ड हैं. इस रो से बाहर आए, और यहाँ पे आप क्या करें जी, that is going to be the footer, and we are going to have the footer imported as well. Yes, footer has been imported automatically. So now let's go and see that this image is coming up right here. So हम इस footer को थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी. Let's close this home. थोड़ी सी स्टाइलिंग से मुराद ये है कि footer को टॉप से
थोड़ा सा हमें मार्जिन चाहिए ताकि ये गैप आ जाए थोड़ा सा, ये इस आखिरी कार्ड और इस फुटर के दरम्यान में गैप आ जाए। सो लेट्स सी फुटर, इसको मैंने कॉपी किया और क्योंकि मैंने फुटर की CSS को इधर ही footer डॉट CSS में लिखने लगा हूं, तो उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी footer dot CSS. Now whenever we are going to write the styles inside here that are going to reflect on the background, so हम इसे कहते हैं जी margin that is going to top should be 24 pixels. That is pretty much like this. Found an error footer dot CSS in this. I mean path का issue है, शायद हमने path सही नहीं दिया हुआ, like footer dot CSS. Let's come to this. Yes, we have done, और हमारा ये top से margin आ गया. So we need a bit more margin rather than 24. Let's make it a 64. So हमें bigger value चाहिए. Yes, that still is not, yeah, now it's fine. और हम इसको दे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे इसके टॉप पे लाइन भी देनी है. So what we need to do is we can do that not margin, border that is going to be top like 1 pixel solid that is going to be black. So let's come back और हमारी लाइन आ गई. ये प्योर ब्लैक नहीं होनी चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा डार्क हो गई है. So let's make it a DDD. Yep, that looks pretty much like what we were expecting. अच्छा, ये जो इसके साथ बिल्कुल जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए. So we, instead of margin top, if we can give a padding to this, so that looks the same where, कहीं नजर आ रही है? ये चली गई, ये बिल्कुल. Got it? So हम इसको भी कर लेते हैं, फिलहाल मार्जिन ही कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या करना है हमें. DDD, हम इमेज को भी थोड़ा सा अप कर लेंगे, इमेज को भी थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देंगे. सो दैट्स द प्रीटी मच लाइक दिस. फिर हम इसको IMG कर लेंगे और इसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं. दैट इज लाइक समवॉट अराउंड 48. सो दैट्स द थिंग. हम इस इमेज को सेंटर करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन राइट इन हियर. सो दैट्स प्रीटी मच. अब हम इस इमेज को करते हैं, इमेज का जो पेरेंट है दैट इज फुटर, इसको हम करते हैं डिस्प्ले गोइंग टू बी फ्लेक्स, और इसको हम करते हैं जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. दैट्स प्रीटी मच लाइक दैट शुड बी इन हियर. नो इट्स नॉट, बिकॉज ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया और इमेज जो है दैट इज गोइंग टू बी justify content is flex. एंड पे, हम एंड पे जाएगा या नहीं जाएगा? So it is not moving up. Okay, it's okay. अगर ये नहीं मूव कर रहा तो we can do the alternate as well, because इसको हम कर देते हैं जी display that is block और margin which is 0 and auto. That needs to be like that. Okay. So margin हमने 0 कर दिया, तो margin top तो हमें 0 नहीं करना चाहिए था, हम दोबारा इसको margin top अलग से दे देते हैं. That is going to be 48 pixels. That's pretty much like that. So with this now we have to design a footer, और inside the footer just to make it responsive हम क्या कहेंगे, एक रो लेंगे और रो में 1 2 3 4 5 कॉलम्स. तो 5 हम एक कॉलम को दे देते हैं 4 और बाकी 3 कॉलम्स को हम 2 2 दे देते हैं. Let's see what actually it makes up like that. So आप इसके बिल्कुल इमेज के बॉटम पे आए और इसको लाइक फुटर रैपर है. ओके, इसको आप यहाँ पे जाके रो करें, एंड देन इनसाइड दैट रो वी नीड ऑल, एंड दैट इज MD, एंड दैट इज हमने 12 कॉलम्स पूरे करने होते हैं. तो हम इसे करें, अगर
4 इसको दे दें और पीछे रह गया 8 और 2 इनको दे दें, ठीक है। सो लाइक 2 और देन 2 2 6 हो गए। The last one is that is gonna be 4. Again, there may be a better approach as well. UL, inside UL we have LI, inside we have at least 5 LIs, and then inside each we have A, and then inside every A we have some lorem only with the 2 characters. So now if I come here and have a look at that. So I do have the first column ready of the footer, got it? And similarly, if I do want to copy this out, paste it in here, paste it in here as well. So I do have these 3, and let us have 1 2 3 4, got it? So इसमें हमारे पास क्या है 1 2 3, I mean we do need to have one more of 2 columns, like indent it so that we can understand it, this, and now this would look pretty much same. हम यहाँ पे 2 images डाल लेंगे, which those images were about like this Apple Store and this one. So हम यहाँ से थोड़ा सा गैप ले लेते हैं टॉप से, so image के टॉप से, so हमने यहाँ पे image को ऑलरेडी मार्जिन टॉप दिया हुआ है, तो हम इसे कह देते हैं जी again margin bottom as well. So that is going to be like margin bottom is 48 pixels too. So this looks a bit nicer. अब हमें यहाँ पे लिस्ट आइटम में 1 2 3 4 5 और 3, सो हमें पहली में 5 चाहिए, 2 3 4 5. We need only one right here, we need only one right here as well, and we need only 2 right here as this. And then what we can do is we can place 2 images instead of anchor tags at this time, या anchor tags के अंदर, क्योंकि images भी clickable होते हैं, so we can write an image tag in here and image tag in here as well. So that's pretty much looking like same. यहाँ पे 2 images आ जाएंगे। अब हमने सारों के ये जो list styling है उनको करना है style. So for that what I need to do is I need to have like यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ एक और क्लास, that is footer inner, या यहाँ इसको रो को क्लास दे दें, या इनफैक्ट आप एक नया पेरेंट बना लें उसको footer inner दे दें. आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट लाइक दैट. सो footer inner के अंदर जितने भी ULs हैं उन सारे ULs के जो डिफॉल्ट मार्जिन्स और पैडिंग्स हैं वो 0 कर दें. हमें पता है कि ULs डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स लेते हैं, उनको 0 कर दें. फिर इन ULs के अंदर जितने भी एलाइज हैं उन सब का जो लिस्ट स्टाइल टाइप यानी उनके जो बुलेट्स हैं वो हटा दें. We don't need those black bullets, right? So we are with them or without them in fact. अब इनको यहाँ पे अगर देखें तो सारों की अंडरलाइन हटा दें और कलर इनका नॉर्मल ब्लैक कर दें. So right inside the allies we are having the anchor tags, so we are gonna text decoration to none, and we gonna change the color to the black, which is 000. So that's it. In fact, it's not pure black. It should be like DDD, just a little. I mean, it's बहुत ज़्यादा gray हो गया. 222. I mean, this seems good. I mean, बहुत ज़्यादा black भी नहीं है और बहुत ज़्यादा light भी नहीं है. And that's pretty much it. और उसके बाद हमने last 2 images डालने हैं और हमारा home page जो है वो that is going to be absolutely ready. So just अच्छा ये हमने images already download किए हुए थे, शायद उनमें ये दोनों हों. So we are going to like Play Store and the App Store. So just copy these images, come back to your on image folder
just copy and paste App Store and Play Store, come back here और last two में हम इन दोनों images को import भी कर लेंगे. So better to just copy it. इसको हम कहते हैं जी, that is Play Store, that is going to be the App Store, and that is going to be the play hyphen store.png, and this is going to be the app store hyphen png. This is not play, rather this is Play Store. So just Play Store and App Store, in fact use them right in place of the images where they are expected to appear, and like this, not like this. Just copy this and paste it in here, copy the App Store and place it in here. So now we know that the images are not actually looking the same. Can't resolve this app store.png. So let's take a look. This is png, and let's copy the name as well, just to make sure that app store, and why it is not actually source. Okay, एक रिजॉल्व हो गया, शायद नाम ही गलत था. दूसरे का भी नाम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, गूगल प्ले, नॉट प्ले. That's something. We gave the wrong name of the images. That's why it is picking up this. So now if we come back and if we have a look at that, oops, it's too big. So come here and inside the anchor tag, what we're gonna do is just copy it, and inside this, let's go to the image and let's have a width of those images. Width, that is gonna be like 300 pixels. So that's pretty much to similar extent, and that is if we like it 200 pixels. Yes, that's looking the same, but the problem is we are having this huge gap in between them. So why is that? Let's have a look. So this is the, I think this is related. Oops, these are the margins. In fact, can you look at that margin top and margin bottom, and why, from where it is taking up these margins? Okay, these are the, yep. So if we have kind of इन दोनों images को target करके इनके margins 0 कर देते हैं, ठीक है. So what we can do is, अगर हम यहाँ overall image का margin जो है वो okay, ये हुआ इस वजह से है कि हमने यहाँ पे ये footer wrapper के अंदर कहा है कि जितने भी images हैं उन सब का margin top bottom जो वो 48 कर दो. That's something we shouldn't have done like that. So हम इसको fix करते हैं rather than के उन दोनों को fix करें. So हमने यहाँ पे आया अंदर, और footer wrapper के अंदर जो image, ये footer wrapper है, और इसके अंदर जो image ये वाला है immediate image, उसको सिर्फ हम देते हैं. तो हम इसको फौरन फिलहाल क्विक पर्पस के लिए footer लोगो की क्लास दे देते हैं, ठीक है. इनफैक्ट बजाय इसके क्या, तो हम यहाँ पे footer लोगो इस image के बजाय यहाँ पे जाके footer लोगो दे, ताकि ये मार्जिन सिर्फ इस वाले इमेज को मिले, सारों का ना मिले. So that's pretty much it, and with that we have actually made that as well. So now what we can do rest is, अच्छा हम इनको थोड़ा सा एंड पे ला सकते हैं, पुश करके एंड पे ले जा सकते हैं ताकि ये राइट साइड पे अलाइन हो. So what we can do is, आखिर में हमारे पास ये दो इमेजेस हैं. So अगर हम इन दो इमेजेस का जो पेरेंट है उसको फ्लेक्स करें, और लेट मी चेक, इन दो इमेजेस का जो पेरेंट है LI और LI, हाँ
इसको हम कह देते हैं जी क्लास नेम अगेन प्ले, या यूँ समझ लें कि ऐप स्टोर है या प्ले स्टोर है, कुछ भी है। स्टोर इमेज रैपर, और इस स्टोर इमेज रैपर को उठा के इधर ले आते हैं। इधर से हम स्टोर इमेज रैपर के बाद करते हैं li, और इस li को हम करते हैं जी डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर इसके अंदर जो हमारे पास लाइक व्हाट आर दोस इनफैक्ट एलाइज के अंदर एज हैं, उन एज को हम कहते हैं जी justify content that is going to be the flex end. Look at that. Hmm, do I have to make it like इनका जो पेरेंट है वो li है? Okay, ये images हैं, so we have to push the images as well, but we can push this entire as well. Let us check. So it is like that, and हम इसको flex, इसको हम देते हैं flex end की जगह center. It is not working either because li is like this, and if we make the anchor tags, where are the anchor tags, इसको हम कह देते हैं जी display block, और हम इसे कह देते हैं margin 0 auto. Yep, but for now we can leave it, in fact, because it is taking a little time. We should have this thing right aligned. ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आखिरी चीज जो हमारी है वो बिल्कुल बॉटम पे एक छोटी सी स्ट्रिप लेके हम कॉपीराइट टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो अहेड, एंड ये सारा कुछ मैं फुटर ही कर रहा हूँ, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, फुटर कंपोनेंट को भी इनफैक्ट कैन इट कैन आल्सो बी ब्रोकन। सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट कॉपी right, and we can have the paragraph like this, and this can be like centrally aligned. Just go, and this is what, so we can bit of having a style like this, or इसे हम कह सकते हैं जी margin, या rather margin we can have padding. Top bottom is going to be like 16 pixels, left right 0, that's it, और हम इसे text align जो है सेंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, सो text align is going to be like center, or that this is pretty much it. So that's it, I think. Good enough, fairly enough, not good enough very good, but in fact हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसको अपने एज अ कर सकते हैं अपने लिए इस्तेमाल, अपनी बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ आवर होम पेज इज ऑलमोस्ट डन, सो वी आर हैविंग अ लिटिल मोर टाइम, सो वी गोना गो टू डिजाइन द इनर पेज लाइक दिस। व्हेन वी क्लिक ऑन एनी कैटेगरी पेज वी शुड हैव दिस कार्ड। सो इसमें डिजाइन तो कोई करना ही नहीं है, सो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इस पेज का नाम क्या हो सकता है, प्रोडक्ट पेज कह सकते हैं, एग्जैक्टली। सो व्हाट वी आर गोना डू इज we gonna simply go, अब देखिएगा हमने होम पेज बना लिया, तो how simple it becomes now to design the rest of the pages. So inside the pages what I gonna do is I gonna create another directory which is product, and inside the product मैं consistency बरकरार रखने के लिए वही स्टाइल अडॉप्ट करूंगा index.js, and then pro product.css. So inside this what I'm gonna do is RAFCE, और इसको मैं ये कह दूं कि this is going to be like product page, और inside here let's have a look at the product page as well. So we gonna do it like class name
duct wrapper. So now think how easy it becomes, because in the product page we do need the same kind of menu and header. So like here we gonna have to have header, ठीक, और हेडर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ऑटो इंपोर्टिंग. इंपोर्ट HEA header from, like, from one directory back, again one more step back inside the components, and inside those components I do have the header kind of thing. So now this is header. अच्छा, अब हमारे पास जो करंट पेज डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सा है? होम का. तो आपको पता है जब हम राउटिंग करेंगे तो प्रॉपर क्लिक पे है उस पेज पे मूव करेंगे, लेकिन सिंस जब तक हमारे पास राउटिंग नहीं है, मैं हेडर भी लगा लूं और साथ में मैं फुटर भी इंक्लूड कर लूं, फिर आपको दिखाऊंगा. हेडर एंड फुटर हमने एक ही दफा डिजाइन किया, और ये हर पेज पे दोनों हेडर और फुटर क्या होने चाहिए? अवेलेबल होने चाहिए. सो दैट्स प्रीटी मच इट. यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए एक डिव लिख देता हूँ, या छोटा सा पैराग्राफ. प्रोडक्ट page blah 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 blah. I mean, what is doing? Blah blah blah. So now if I come back into the app.js और home के बजाय, home को मैं थोड़ी देर के क्लिक कमेंट करके यहाँ पे आपको दिखाऊँ हूँ product page. So it is importing automatically. So I do have this product page here. All the header that we have in fact already written in footer. तो हमने सिर्फ हेडर और फुटर को इंपोर्ट किया. अब हम सिर्फ बीच का एरिया डिजाइन करेंगे, बाकी कुछ भी डिजाइन नहीं करेंगे. और बीच का एरिया भी इंटरेस्टिंगली डिजाइन नहीं करेंगे. उसकी वजह क्या है कि बीच के एरिया में क्या आने हैं? कार्ड्स आने हैं, और कार्ड्स हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिजाइन कर चुके हैं. सो ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू राइट द कार्ड्स ओवर हियर. ठीक है, और उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट रैपर को पैडिंग दे सकते हैं टॉप बॉटम से, ताकि इसको हम कहते हैं जी P5. आपको पता है P5 इसकी क्लास है, बिल्ट इन क्लास है बूटस्ट्रैप 5 की. P5 मतलब पैडिंग 5, और पैडिंग 5 का मतलब चारों साइडों से 5 टाइप है. तो मैं इसे कह दूं PT5 पैडिंग, टॉप से 5 दो सिर्फ. तो दैट इज गोइंग टू लाइक, सॉरी, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी. सो ये इसने टॉप से पैडिंग दे दी है. सो दैट्स योर एब्सोल्युटली राइट. सो वी विल डेफिनेटली give the padding to somewhat inside the, like we can do it यहाँ पे एक बना के हम इसे कह सकते हैं जी product. Is it now fine? अब हम इसको दे सकते हैं जी pt, that is going to be 5, and this is going to give the, चूंकि हमने टेक्स्ट हटा दिया. So so hello, now this is हम padding top और bottom. अब हम इस p के बजाय यहाँ पे क्या करेंगे? header and footer already are in place. So what we need to do is we need to have it like card, वही card जो हमने एक दफा बना लिया. ठीक है, so we don't need this closing card tag, rather we have the self closing, and we need to import this card as well. So card, and this is also going to be the card. So that's pretty much it. So we have like this. उसकी वजह यह है कि हमने वो रोज और कॉलम का स्ट्रक्चर नहीं बनाया बूटस्ट्रैप के अंदर. So what we do need to do is, यहाँ पे आप देखें आपको 1 2 3 कार्ड चाहिए, यानी 12 कॉलम को 3 पे डिवाइड करें तो 1 4. So what we need to do is simply row, simply call MD4 और इसके अंदर कार्ड डाल दें, similar the way we did. और इसको हम 2 और 3, एक रो में हमें कितने चाहिए? 3 कार्ड चाहिए. So exactly like that, we did not need to do anything else. अच्छा, इसके ऊपर भी ये टॉप लीड टेक्स्ट चाहिए, तो ये हमने होम के लिए बनाया हुआ है. तो हमें करना ये चाहिए था कि हम उसको भी एक वो कर लेते, ये इसका अलग से कंपोनेंट बना लेते. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, सिंस वी आर गोइंग टू डू
अभी हम बहुत ज़्यादा कंपोनेंट के रश में भी नहीं जाना चाहते, so, जो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं उनके लिए बेशक अलग से कंपोनेंट फिलहाल न बनाएं। तो जस्ट कॉपी इट in here right below the header, paste it in here, or you are good to go with. We are having the product page as well. We'll be coming back to these filters as well once we'll be implementing that, but in fact the majorly overall design is done. यहाँ पे आप 6 कार्ड रखें, 10 रखें, 12 रखें. In fact if we keep on copying and pasting these products, क्योंकि ये loop लगनी है ultimately जब हमारे पास आना है, so we will be having all those products exactly like that with one difference. ये छोटा सा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, margin चाहिए. तो what we gonna do is कि we just let me come back here, और यहाँ पे हर कॉलम को आप दे दें जी MB which is margin bottom or which is like 5. So if we copy this class, we paste it in here, we paste it in here, and now if we keep on repeating these cards, we are not going to have those images as well. So that's that looks great. So instead this margin ज़्यादा हो गया, ये इतना सा होना चाहिए. So let's, I mean यहाँ से आप 5 को 3 कर दें या 4 कर दें, that would be the same. So we are having the home page, we are having the product page, so we have got little more time left with us, so we can in fact go ahead and we are going to talk about the product detail page, this one. यानी जब हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, सो वी गना, अब देखें इसका भी फुटर और हेडर एरिया सेम है. व्हाट वी नीड टू डू इज वी ओनली हैव टू प्लेस एन इमेज एंड this piece of text on the right side as well. So this is called product detail page. So come back inside the pages and write inside the pages. Sorry, let me collapse everything that is extra. Inside the pages we have home and product, 2 pages, and another page which is product detail. And inside the product detail page, let me put at index.jsx, और अगर CSS की जरूरत पड़ी तो हम वो भी बना लेंगे, RAFCE. एंड यहाँ पे आप इसको कह दें जी which is, देखें नाम इतने मीनिंगफुल रखें ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो सके. प्रोडक्ट detail, that's pretty much it. अब इस प्रोडक्ट डिटेल में आप क्लास नेम दे दें product detail wrapper, or inside it we know that we need a row because we have 2 column layout in it, or we have like call MD6, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक इमेज, और एक सेकंड भी हमें चाहिए जी लाइक कॉल MD6. दैट्स प्रीटी मच इट. ये 6 और 6, या ये 7 कर लें, इसको 5 कर लें, पहले वाले को छोटा कर लें, दूसरे वाले को 7 कर लें. सो दैट्स प्रीटी मच इट. यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, एक चाहिए हमें हेडिंग, और इसको आप कह दें जी H3 प्रोडक्ट टाइटल, और इसको करें P सम लॉरम इप्सम. सो इफ यू कम बैक हियर, अब हमें इस वक्त कौन सा डिस्प्ले हो रहा है, प्रोडक्ट का, तो हमें कौन सा डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्ट डिटेल का. सो लेट्स कम बैक हियर, क्लोज दिस आउट, क्लोज दिस अप एज वेल, और यहाँ जाएं, प्रोडक्ट को भी कमेंट कर दें. ये सारी चीज़ें हम अनकमेंट करेंगे जब हम राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे, तो अभी हमें राउटिंग नहीं है, तो हमें एक वक्त में एक दिखाना है, तो हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है. सो यहाँ पे जाएंगे जी प्रोडक्ट डिटेल, this one like this one. So if we come back here, so we are having 6 और 6, यहाँ इमेज हमने नहीं डाला और हेडर और फुटर अटैच नहीं किए. तो प्रोडक्ट की डिटेल पेज में जाएं, और इसके टॉप पे क्या लगा दें आप, हेडर, और इसके बिल्कुल बॉटम पे क्या लगा दें आप, फुटर. दैट थिंग प्रीटी मच डन. यहाँ पे आप लगा लें जी फुटर, यहाँ पे भी आप लगा लें जी फुटर. So if we come back here, what we need is
we also need top and bottom padding the way we did in the previous case. So इसको आप कट करें और यहाँ एक और div बनाएं, उसे कहें जी p detail wrapper, p for product detail wrapper. I mean wrapper तो ऊपर हो गया, product detail inner कह दें और इसको कह दें जी p5 और इसके अंदर वो चीज़ पेस्ट कर दें जो भी हमने कट की है. इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दें. इफ यू नाउ कम बैक तो हेडर फुटर सेम है, प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे हमारा इमेज आना है. उसके लिए हमारे पास स्पेस बच गई है. सो वी कैन राइट कम हियर and we can import the image. Import productivity1 from like this. We again need to go out of this sets image slash product1 dot png. So with that thing, pretty much it, like this, and this. I mean, what I'm doing, product1 और इसको यहाँ पे आप रख लें, place it, and that's pretty much it. That is the detailed page of the product, and then we have to add the buttons and the things like that. But I think that's good enough for today. We have made 3 pages, and these are the all, and then not all. In fact, we have to create the add to bucket this overlay type pop-up, and then we have to create the sign in and user registration. And but in fact, most of the part is done. And then else, what else is left? हाँ, फिर जब login होगा तो login होने के बाद हमारे पास checkout की स्क्रीन आएगी, proceed to checkout, payment की पेज आएगा. So we probably need, I think, one more class in fact to finish with the front end, and then we will be back with the to the back end as well. So hope so कि यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न नहीं है. So if there is, do let me know. और आपकी जो लास्ट वीडियो थी उसकी मैंने यूट्यूब पे नई प्लेलिस्ट बना के उस पर चढ़ा दी है. ये वीडियो भी होपफुली आज ही चढ़ जाएगी. प्लेलिस्ट का टाइटल है, इफ यू कैन गो एंड इन फैक्ट सर्च द सेम चैनल विच यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट दे दी है, एंड दैट इज दिस वन. दिस प्लेलिस्ट का जो टाइटल है, दैट इज MERN Stack प्रोजेक्ट KFC Clone. और इसमें जो कल वीडियो थी पहली वाली, वो ऑलरेडी इन प्लेस है. So today's video will also be uploaded. Go ahead, look at that. At least try to make this full project once. तो आपको सारी चीजें इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है जी. So if there is no question, we are going to close this session. If there is, you can ask.